Good afternoon, sir. Gracie. Get ready. Grace. Gracie. Grace. 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 Okay, I don't want people to die. I'll take the cure. I think the metallurgy students were not well informed, and few students of our batch also. But these days people follow at least WhatsApp messages. Yes, the mechanical students are almost there, I think. Okay. तो on average 35 तो होना चाहिए. सर 2 मिनट वेट कर लीजिए. हाँ थोड़ा वेट कर लो. तो 3 बजे किसका क्या है बोल रहे थे? 3 बजे प्रॉब्लम है. ठीक है जल्दी खत्म कर देंगे. Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर मतलब एक्चुअली आपने 2 बजे बोला फिर 2:30 बजे हो गया तो वो अरे मुझे लग रहा है. मेरा काम चल रहा था एक उधर. फिर मैं लॉन्च करने गया. फिर आ गया था मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले. मैंने सोचा ये कंप्यूटर इतना टाइम लगता है. मैंने सोचा 2:30 बजे कर देता हूँ. क्लासरूम में जब बहुत स्लो ऑन होता है. लो 70 हो गया. वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. ओके 50% अटेंडेंस इज ओके. এভাবেও ফিরে আসা যায়. গুড. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ाए थे द वेज ऑफ प्रोडक्शन पोलराइज्ड लाइट. ओके तो उसमें से हम लोग काफी सारे मेथड बताया था. तो सर यस सर ये कितना 3:30 बजे तक चलेगा सर क्लास? हाँ ऑब्वियसली 1 घंटा 3:30 ही होता है. क्या कुछ काम है किसी को? Yes, sir. 3 बजे. क्या काम है? सर जाना है बैंक. वो अच्छा बैंक 3 बजे लेन देन बंद कर देता है. सर ठीक है 4 बजे तक मिलता है. ठीक है ठीक है. ओके ओके 3:10 को छोड़ देंगे. ओके स्टार्ट. Okay, sir. Okay, sir. सो जैसे प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट हम बता रहे थे तो उसमें काफी सारे मेथड हम लोगों ने बताया. फर्स्ट था पोलराइजर. सेकंड क्या था? रिफ्लेक्शन. थर्ड था डबल रिफ्रैक्शन. फोर्थ था स्कैटरिंग समथिंग लाइक दैट. तो वहां पे अच्छा उससे पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि मेलास लॉ के बारे में. जो 1 मिनट. अच्छा और एक चीज बताना मैं भूल गया. जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन फेनोमेना है जैसे जैसे बताया था कि पोलराइजर वर्क्स ऑन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. suppose if this is a polarizer, okay, let's say if this is y axis and this is let's say x and let's say this is z. Let's say light is coming from here along the z direction. Okay, so let us consider that you have several polarization direction of electric field. So that means it is a unpolarized light. So now so you can make component of each arbitrary direction into 2 component. Let's say it is ey. Let's say it is ex component. So all arbitrary direction you can resolve into 2 component, parallel and perpendicular. We know that. So now as I mentioned that if we say that y is the path axis, let's say y is the path axis of this polarizer, then all the component will be absorbed except the y vibration along the y direction will pass out. Okay, coming out from the polarizer. So this works on selective
absorption. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. ये काफी जो केमिस्ट्री का जो एनालिसिस है, बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डाइक्रोइज्म. स्पेलिंग क्या है इसका? dichroism. So there are several type of dichroism. Depends on material you are using. Magnetic dichroism, any polarizing thing works on dichroism. Okay, so if something, if it is a light, and then you have absorption of light. So if it is magnetic, then there will be magnetic kind of absorption. So mostly so इसको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं डाइक्रोइज्म. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आई थिंक यू विल एनकाउंटर ऑलरेडी विद दिस वर्ड. ये डाइक्रोइज्म सुना है? No, sir. Yes. So और एक चीज आपने सुना होगा, कायरालिटी. कायरालिटी सुना है? Yes, sir. Yes, sir. लैक्टोजन हम लोग क्या खाते हैं? लैक्टोजन या ग्लूकोज डी एंड ग्लूकोज एल. ठीक है, जब ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ये बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता ग्लूकोज एल, डाइक्रोइज्म जो है, और डी हम लोग अब्सॉर्ब कर पाते हैं. तो एल इज ऑलमोस्ट पॉइजन, बट केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम of glucose. Okay, so now so if you have some material which can absorb either of these L or D or L, okay, so इसको बोलते हैं chiral separation by using selective absorption, और वहां पे absorption हो जाएगा, selective absorption. So that is how you can separate chiral molecule. There are also people use dichroism method. It's a very popular important term. That's why I told you that dichroism is very important. In many cases people use dichroism word. So okay, that's all. So dichroism क्या है? So what is the subtopic? Dichroism, जैसे dichroism कैसे वर्क करता है पोलराइजर के लिए. Okay, some polarizer they work on selective absorption. So this selective absorption is called dichroism. Okay, so this selective stuff depends on the chirality, polarization state, magnetic spin, whatever. Okay, वो मैं बाद में, but ये word आप याद रखिए, is very important. What I now our job is to come forward. Let's say it's a Malu's law. Let's Malu's law. Discuss Malu's law. Malu's law. So we know that suppose if you have a polarizer, let's say polarizer, and now say we have an example. So light is going in this direction, and let's say this is your y and this is your x direction, and the light is coming out. So this is the z direction, like this. Okay, so now जैसे हम लोगों ने बताया, बार बार एक ही डायग्राम है. So you have an unpolarized light here, unpolarized light. Okay, so now let's say this unpolarized light came here. Now suppose it is here. Okay, so this is your x. Okay, थोड़ा सा इसको x डायरेक्शन को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, because the x और z एक ही दिख रहा है. So this is, let's say, this is x direction. So that means, so this is also x and this is also z. Okay, so now what happens? So we have two kind of vibration of E. Suppose let's say if it is vibrating along, sorry, this is not same, this is y. Let's say this is, if it is vibrating along y direction, that means this one. And if it is vibrating along x direction, so something like this one. Okay,
So now let's say if y is the path axis, then you will see that the light will coming out which have vibration along the x-axis. Okay, so that means if I say, so if say that y is the path axis of polarizer, then it is true. So now we have a polarized light. Okay, so now suppose if I put another polarizer here, let's say this one. Okay, let's say that another polarizer. Okay, so this is polarizer 1, polarizer 2, and then it will, so मैं इस point में आ रहा हूँ. So this is your y direction again, and this is your x direction, and light is coming out from here another z direction, and this is the wave vector of light. Okay, so now this point में क्या होगा? So this is your y direction, this is your x direction. So what happens? And here, let's say again, this is, let's say this is y1, this is x1, this is y2, this is x2. Okay, let's say this is y2 is the path axis of the polarizer 2. So this is the path axis of polarizer 2, polarizer 1. So now see, so we ये जो light है ये तो unpolarized नहीं है, ये linearly polarized light है, linearly polarized light. Okay, that means जिसका plane of polarization क्या है, कौन सा plane में vibrate कर रहा है, ये x direction में कर रहा है ना, xz plane में वो vibrate कर रहा है ना, xz plane. ठीक है, तो लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन y है, ऐसे ऐसे. ठीक है, सो नाउ सॉरी x, ये x डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, x डायरेक्शन और xz प्लेन में कर रहा है. सो नाउ एक बात बताइए, सो ये जो वाइब्रेशन अभी क्या होगा इसका, अगर y है इसका पास एक्सिस है तो क्या होगा इसका, बताइए. पास एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो पास करता है ना, परपेंडिकुलर वाला तो ऑब्जर्व हो जाता है. हाँ, ये मैंने Yes, sir. गलत कर दिया. ओके, तो ये y डायरेक्शन में है ना, तो ये पास होगा. तो मतलब yz प्लेन जो वाइब्रेशन है वो पास होगा ना. जो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो आपको जो मिलेगा कंपोनेंट वो यही है. That's all. Okay, so now तो ये पूरा निकल जाएगा. So now why it is happen like that, that means the path axis y1 and y2 are parallel. Okay, so now if I rotate this polarizer 2 about the z axis, okay, then what will happen? Then if I say the theta is the angle between y1 and y2, okay, then what will happen? Theta will increase. Okay, then some component of this vibration will be parallel to the y2 axis, then it will come out. So that means you will see the linearly polarized light, with yz plane of vibration. But the intensity of this light linearly polarized, which is coming out from polarizer 2, actually it has been seen that, so if it is इसका इंटेंसिटी अगर I0 है, जो इंटर करने से पहले I0 होगा, तो ये होगा I0 क्या था, ये पहला फ्लो क्या था, cos square theta. यस, cos स्क्वायर थीटा. So now इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर और इसको बोलते हैं एनालाइजर.
ओके, तो मतलब अगर तो देखिए पोलराइजर से पहले अनपोलराइज्ड लाइट है, तो पहला स्टेप क्या है, इसको लीनियरली पोलराइज कर रहा है with a certain direction of vibration or certain plane of vibration, okay, of the electric field. And then when it comes to the analyzer, then what will happen, you will have again selective absorption, and some component of this vibration electric field will pass out, which is parallel to the y2 axis, which is actually pass axis of the polarizer, to इसको हम analyzer बोलते हैं, ठीक है. So this is Malu's law. So in some book they don't say about this part, okay. Instead what they say in describing the Malu's law, suppose if I say this is the linearly polarized light, which is actually falls on the polarizer, and if the direction of the polarizing electric field of the incident light and the pass axis of the polarization making an angle theta, then the intensity of the light coming out from the polarizer is this one. इसको ये सभी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Okay, so now if I describe this Malu's law in a different way, so let's say we start the experiment with linearly polarized light instead of having polarizer and analyzer both. Let's say this is your polarizer, okay, okay, and this is the grids. मतलब if this is the grid, then which one is the pass axis? Okay, so let's say this is your x direction, and let's say this is your y direction. Okay, so now तो अगर वाइब्रेशन, अगर लाइट यहाँ पे आ रहा है सपोज, ओके, लाइट यहाँ पे आ रहा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक आर्बिट्ररी वाइब्रेशन है. मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें सम कंपोनेंट विल बी दिस वन एंड सम कंपोनेंट विल बी दिस वन, ओके. तो मैं ओरिजिनली जो है, लेट्स से दिस इज द आर्बिट्ररी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. सो नाउ so in case of, so if it is the arbitrary direction, then what will happen? If it is arbitrary, if I say y is the pass axis, so now it is making the electric field of vibration of the linearly polarized is making an angle theta with the pass axis. So theta is the angle between y, the pass axis, and electric field vibration. Okay, then Malu's law is this one. I will be, let's say जो light ये आ रहा था, let's say light ऐसे आ रहा था आपका, okay, और ये निकल रहा है I0 इंटेंसिटी में आ रहा था, ये I है, then I will be I0 into cos square theta, ठीक है. So this is the two way of describing Malu's law. ये हम लोग describe कर सकते हैं, ये बहुत ही easy है. Suppose if I say suppose if this is the electric field, let's say electric field E equal to E0, so let's say cos omega t plus theta, okay, let's say this is A0, okay, the or A0 whatever, okay. So now, so ये टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ये जो आ रहा है, okay. So now what will happen if I resolve this one, then it will be E क्या है sin theta, और ये कितना होगा E Cos theta. So now, so E cos theta will be parallel to y axis, तो पूरा ही पास होगा, और E sin theta will be absorbed. So E theta will get absorbed.
and since E cos theta is parallel to y axis, so this will comes out. So if it is comes out, then what will be the equation of the electric field when it is coming out from here? तो आपको ये होगा, आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा E जो निकल के आ रहा है आपका, तो इसका इलेक्ट्रिक मैं बोलो E डॉट इक्वल टू E cos थीटा. E cos थीटा मतलब क्या है? E0 cos theta into cos omega t plus phi करते हैं इसको phi. So this is the amplitude of the light coming out from the polarizer. Then intensity क्या होगा? It is equal to, let's say this is your E0 dot, E0 dot square. So that means E0 square cos square theta. इसको हम लोग बोलते हैं E0 स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं I0 cos square theta. So this is your Malu's law. समझ में आ रहा है? Please explain एक्सप्लेन ही तो किया. once more. अच्छा ठीक है. ये डायग्राम समझ में आया? Yes sir. ओके. ये नोट cos थीटा से मतलब थोड़ा नहीं समझ में आया. बता रहा हूँ. सपोज आपके पास ये एक पोलराइजर है, ठीक है? इस पोलराइजर में जो पास एक्सिस है ये है, लेट्स से दीज आर द पास एक्सिस. मैं इसको बोल रहा हूँ y, तो y axis is the pass axis, x axis is the absorbing axis. Okay, so now let's say we have a arbitrary electric field, this one. मतलब जो लाइट आ रहा है वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, नॉट एक्स डायरेक्शन में वाई, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड है और पोलराइज्ड होगा भी तो एक ही डायरेक्शन में, वो किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में अब ये कर रहा है. तो अगर मैं इसको अभी कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो ये आपका y है, ये और ये आपका x है ना. तो अगर कितना आर्बिट्ररी इसका एंगल कितना कौन डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है ये बताना पड़ेगा. दिस इज द थीटा डायरेक्शन. तो ये होगा आपका, और इसको मैं e बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं ये होगा e sin थीटा और ये होगा आपका e cos थीटा. तो ये तो पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो e पास होगा ना. e sin थीटा तो पास नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर. Yes, तो ये जो निकलेगा पोलराइजेशन से, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E डॉट इक्वल टू होगा E cos थीटा एम्पलीट्यूड, मतलब E0 cos थीटा cos ओमेगा t प्लस phi. ये आपका इक्वेशन है, जो कि ये आपका एम्पलीट्यूड है. तो इंटेंसिटी कितना होगा? ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा I0 cos स्क्वायर. दिस इज योर मेलास लॉ. अभी समझ में आया? Yes sir, definitely. ओके, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक. जैसे मैंने बताया था वी विल डिस्क्राइब डबल रिफ्रैक्शन. तो वही अभी स्टार्ट करते हैं. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. कितना टाइम हो गया? सो वी हैव 15 मिनट. ओके, थोड़ा सा कल एक्सपेरिमेंट किए थे इसके बारे में सर. ये थे तो पोलराइजेशन Yes. पोलरिमीटर से ना. पोलराइजर मतलब कीपैड फोन को तोड़कर बनाया. कहाँ से तोड़ दिया भाई? घर में किए थे? यस सर. हाँ मिला. उसमें क्या हुआ क्या ना कि जब उसमें टूटा सर, तो स्क्रीन जब तोड़े तो फिर से उसको जब पोलराइजर को जब घुमाए थे हाँ. तो इंटेंसिटी उसका कम जाता था जब ऑन करते थे स्क्रीन तब. अच्छा. तो जैसे ही रोटेट करते थे एंटी क्लॉकवाइज तो उसका इंटेंसिटी कमते कमते 0 हो जाता था. हाँ हाँ हाँ.
ऐसा होता है। आपने ये अगर लैब में आएंगे तो यहाँ पे पोलरिमीटर करके एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, पहले एक लाइट रहता है, पोलरिमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो लाइट के बाद क्या करते हैं, ये एक सोर्स है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर इसको एक पोलराइजर का थ्रू में पास कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब में थ्रू उसको पास कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस ट्यूब में हम लोग शुगर सॉल्यूशन रखते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ओके। शुगर इज ए कायरल मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दे आर तो क्या होगा, ये शुगर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जो प्लेन ऑफ रोटेशन है इसका, इस प्लेन ऑफ रोटेशन को रोटेट कर देगा। मतलब सपोज अगर आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ दिस मोबाइल सपोज, तो ये क्या होगा, ये निकलने के बाद ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, इसका प्लेन मतलब दूसरा प्लेन में वाइब्रेट करेगा, लेकिन प्लेन फिक्स रहेगा, बट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विल रोटेट, एंड दैट रोटेशन वी कैन find out by Malu's law within another polarizer. तो ये मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये रोटेट होके इतना ऐसा हो गया, तो ये पहले ऐसा था ना, ऐसा हो गया, तो ये थीटा इसका रोटेशन है, इसको ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। तो अभी तो ये पोलराइजर, सपोज ये पोलराइजर का पास एक्सिस है दिस वन y, नाउ इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन इतना है, तो इसको अगर रोटेट करेंगे, जब ये पास एक्सिस इसका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है इससे जो पैरेलल होगा तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, अगर इसके जो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपको जीरो इंटेंसिटी मिलेगा। सो फ्रॉम दिस टू डेटा वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, बिकॉज एक बार सेम एक्सपेरिमेंट आप विदाउट शुगर सॉल्यूशन में कर सकते हैं, और उस मतलब उसको एयर में कीजिए एक बार, फिर एक बार शुगर सॉल्यूशन में कीजिए, तो यहाँ से दो बार मेलास लॉ देखिए, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा आपको, जो डिफरेंस। शुगर सॉल्यूशन मतलब कैसे करें सर? शुगर सॉल्यूशन एक ट्यूब है, पोलरिमीटर ट्यूब है, जिसके थ्रू में आप शरबत भर दीजिए, शुगर, घर में जो शुगर होता है। सर लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे तभी वो मतलब इंटेंसिटी उसका कम ज्यादा हो रहा था, जब क्लॉकवाइज हो रहा था तो नहीं, काला हो जा रहा था। वो काला जो है एक्चुअली क्या है ना, वो आपका जो लाइट कौन सा लिए थे आपने? लाइट जो मोबाइल का लाइट था। बैक साइड का? यस सर, स्क्रीन लाइट। स्क्रीन का लाइट? अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, वो जो स्क्रीन का जो लाइट है, आपका जो स्क्रीन का जो लाइट का जो कलर है, दैट कलर एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेट मतलब वो पोलराइजिंग जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करके कलर चेंज होता है एलसीडी में, ठीक है। तो आपका स्क्रीन से जो लाइट निकल रहा है वो पार्टिकुलर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में नहीं है, हर एक जगह में हर एक डिफरेंट है, ठीक है। अगर व्हाइट लेंगे तब जाके शायद you will get the whole screen will have a same state of polarization, and in that case if you rotate maybe you can see, but as you mentioned parallel or sorry clockwise anticlockwise में difference होना नहीं चाहिए, because both the rotation is symmetric। लेकिन मोबाइल में जो रहता है वो प्योर पोलराइजर नहीं रहता है सर। वो ग्रेडेड, वो एक्चुअली पोलराइजर है, वो पोलराइजर ही है, वो प्योर प्योर इम्प्योर कुछ नहीं है, ये पोलराइजर इज देयर तो इट विल बी पोलराइजर। ओके ठीक है, अभी ये हो गया। सो नाउ डबल रिफ्लेक्शन 10 मिनट में होगा भी नहीं, 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट बचा है, तो कल मिलता है फिर। एक्चुअली और एक क्लास मैं लूंगा जिसमें पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। सो टुमारो 10 बजे से उसके बाद क्या क्लास है? कोई क्लास नहीं है ना आप लोगों का? नो सर, तो बी का सर
Okay, I will take a class from 10 to 12. 2 आवर हाँ, वो भी नहीं लगा, 1.5 घंटे में हो जाएगा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.